यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हम डिस्कस कर रहे थे सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जैसे लिखेंगे आप नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज, कैलकुलेट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास of a given system. As shown. This is a system given. It is a circular disc. Having mass 2m. And mass is 2m. Now you can now here इसके ऊपर हमने एक और डिस्क रखी हुई है छोटी सी, या there are 4 masses are placed on it. Each of mass m by 2, and these are placed at a distance r by 2 from there, right? There are only 3 masses. That is the first A, that is B and C, right? So here there are 3 masses and one of the disc. On the disc there are 3 masses is placed at a distance r by 2 from the center as shown in the figure. You can see. So this is the O center. Now, how to deal with it? Let's suppose I am considering O as origin. That is 0,0. Now, अब देखो मैं क्या लिख सकता हूँ। सबसे पहले पूरी इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? The center of mass of the disk is at its own center, मतलब that is at origin. Now, इन बाकी जो 3 masses बचे उनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकाल सकता हूँ? I have to calculate RCM. So that is M1 R1 plus M2 R2 plus M3 R3 plus this, so it will come M by 2. If we look at this A वाले के लिए कितना है? That will be R by 2 I cap plus 0 J cap. And now for B वाले के लिए कितना है? M by 2 into 0 I cap plus R by 2 J cap. For the C वाले कितना है? M by 2, that is R by 2 minus J cap. And for the D, for the other one we can say, like for this, that is 2m into 8 at origin. Divided by total mass. What is the total mass? It is 2m plus m by 2 plus m by 2 plus m by 2. That will become 2m plus m by 2. 3m plus m by 2. That will become how much? 7m by 2. राइट अगर हम इसमें से देखें, these two terms will cancel out. सिर्फ बचेगा क्या? It will give only mr by 2, mr by 4 I cap divided by 7m by 2. That will come out to be 2r by 28
I cap, that will come out to be r by 14 I cap, right? So this is the location of the center of mass for the given system. ये इस given system के लिए center of mass की location है, समझ आया? This is the thing. देखो नेक्स्ट we will discuss the conservation of momentum. Let's say this is the system, and in this system there are number of particles m1, and these are moving with v1, v2, v3 or v4. Now what is the momentum of the system? Here देखो particles are moving due to internal forces. Which always acts in pair. So यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ? What is the momentum of the total force? What is F total? Force total. That is equal to what? 0. If the internal force is 0, so we can say F internal is what? That is d by dt of change in momentum of system. So we can say system is 0. It gives if only internal forces are acting on a system, then its change in momentum is 0. That is
momentum remains conserved. राइट तो हम ये चीज बोल सकते हैं, देखो क्योंकि कोई भी अगर सिस्टम है, उस सिस्टम में सिर्फ अगर इंटरनल फोर्सेस लग रही है तो इंटरनल फोर्सेस आर ऑलवेज ऑकर्ड इन द कंजुगेट पेयर्स. If it occurs in the pairs, so you can say this thing कि net internal force is zero. If the net internal force is zero, then the internal force is basically change in momentum of the system. तो system momentum कितना है? Zero. It means momentum remain conserved. You can say the momentum of the system is same thing as the momentum of center of mass. Right? But if external forces are acting, then external force is equal to d by dt of what? External force is d by dt of momentum of system. Right? Or you can say it is a change in momentum of the system, or you can say it is for the center of mass. So if only internal forces are acting, then internal forces are acting. If only internal forces are acting, then and center of mass initially at rest, then it remains at rest always. That is, its position doesn't change. Are you getting it? So its positions will not change. मतलब मैंने ये कहा, अगर इनिशियली मान लो कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है और सिर्फ सिस्टम में इंटरनल फोर्स लग रही है, अगर सिस्टम रेस्ट पे है सेंटर ऑफ मास और सिर्फ इंटरनल फोर्स लग रही है, तो इट मींस मोमेंटम चेंज ही नहीं होगा सिस्टम का या सेंटर ऑफ मास का. अगर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा तो इट मींस जैसा वो पहले होगा बाद में भी वो वैसा ही रहेगा. दैट इज द थिंग. इज इट राइट? दिस इज द पॉइंट. जैसे मैं आपको बता दूं, जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो हमारे पास है, दैट इज द कोलिजन्स. कोलिजन्स में हमारे पास मोमेंटम रिमेन्स ऑलवेज कंजर्व्ड, रिमेन ऑलवेज कंजर्व्ड इन द कोलिजन्स ओनली. राइट? जैसे लिखें क्वेश्चन, a person of mass capital M
is standing on the piece of wood of length small l and mass small m. On one end of the piece of wood, when if person starts moving and reaches at other end of wood and reaches at other end of log, then calculate displacement of log during it. This is the thing. A person है which is standing on the log of mass small m and having mass capital M and its length is L. And he starts moving, due to which the log will shift by some this, क्योंकि जैसे ही आगे आएगा तो it will shift in this direction. पूछा गया है when it reaches at this point, तो उस टाइम पर ये कितना शिफ्ट हो गई है, लाइक समझ आ रहा है क्वेश्चन क्या है? तो when it moves from this to this, तो what is the distance traveled by this log? log कितना चला गया? देखो मैं इसको सबसे पहले आपको शॉर्टकट से बताता हूँ. देखो इनिशियली जो भी हमारे पास सिस्टम था, उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कोई ना कोई फिक्स थी. द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज फिक्स्ड. क्यों? बिकॉज इट इज एट रेस्ट. नाउ व्हेन इट मूव्स, तो इन दिस मोशन व्हेन इट मूव्स, तो हम ये चीज साफ देख सकते हैं कि देयर आर ओनली इंटरनल फोर्सेस आर एक्टिंग बिटवीन द log and the man, between the piece of wood and the man. And due to internal forces, we know the system momentum will not change, and if the center of mass initially at rest, so it will remain at rest always. तो it means center of mass की यहाँ पर पोजीशन चेंज नहीं होगी. अगर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन नहीं चेंज होगी तो वी कैन इजिली कैलकुलेट इट. देखो कैसे, दैट इज सेंटर ऑफ मास पोजीशन रिमेन सेम. सेंटर ऑफ मास position remains same. देखो इसका क्या मतलब है कि जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है वो ऑलवेज इसमें क्या रहेगी, सेम रहेगी. देखो अब सबसे पहले यू कैन सी इजली कि जैसे ये इधर लोकेट किया होगा और ये इधर गया है, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन तभी सेम रह सकती है अगर दो मासेस हैं, इट इज एट फिक्स्ड. तो वो तभी सेम रह सकती है अगर एक मास एक डायरेक्शन में मूव करे और दूसरा मास दूसरी डायरेक्शन में, राइट? जैसे अगर आप देखो कैपिटल M हैज ट्रेवल्ड द डिस्टेंस L, बट इन एक्चुअल इट हैज ट्रेवल्ड विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस दैट इज L माइनस x, क्योंकि x डिस्टेंस इधर भी तो शिफ्ट हो गया ना. एंड दिस स्मॉल m हैज ट्रेवल्ड द डिस्टेंस x इन दैट डायरेक्शन. तो कैपिटल M हैज ट्रेवल्ड द डिस्टेंस L माइनस x इन दिस एंड स्मॉल m हैज ट्रेवल्ड x डिस्टेंस इन दिस. सो टू कीप द पोजीशन टू बी फिक्स्ड,
We know M1 D1 is M2 D2. So to keep the position to be fixed, you can say that is capital M into L minus X, that is equal to small m into X. That is capital M into L, it is equal to small m into X plus capital M into X. So what is the value of X? Capital M plus small m. Is it clear? So it will become like this. Now next. अगर आप चाहो तो आप इसको एक पोजीशन एक तरीके से और भी निकाल सकते हो, but that will be the lengthy method. That is, by first of all you will calculate the center of mass position in the first case, then you will again calculate the position of center of mass और दोनों को इक्वल कर दो तो आंसर आपको यही आएगा. Is it clear? Next. Yes, लिखेंगे a bomb of mass 5 kg placed at rest explodes into 3 pieces if two pieces of same mass starts moving with after explosion it breaks into fragments of masses in the ratio 1:2. If fragments of equal masses starts moving with 10 meters per second in perpendicular direction, then calculate velocity of largest fragment.
लार्जेस्ट फ्रेगमेंट। देखो इसमें क्या हो रहा है, यस देखो इसमें क्या चीज हो रही है, इसमें हमारे पास एक बॉम्ब है जिसका मास है 5 kg, इट इज एट रेस्ट एंड इट ब्रेक्स या इट एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रेगमेंट्स if after explosion 3 pieces, if after explosion it breaks into fragments of masses in the ratio 1:1:2, if fragments of equal masses are starts moving with 10 meter per second in perpendicular direction, then we have to calculate the velocity of largest fragment. Now initially हमारे पास 5 kg का है, it is at rest, u is 0. Then it breaks into 3 fragments. If it breaks into 3 fragments, so you can say that is in the ratio of this, m1 ratio, m2 ratio, m3. That is 1:1:2. So we can take m1 ratio, m2 ratio, m3, that is 1:1:2, means it is m1 plus m2 plus m3, it is equal to m plus m plus 2 and 4m, and that is equal to what, 5 kg. So what is m? 5/4. So what is m1? 5/4 kg. What is m2? And what is m3? It is 2m. That is 5/2 kg. Right? Now, इसके कुछ एक्सप्लोजन होने के बाद एक तो मान लो इधर चलने लग जाता है m का, और एक m का परपेंडिकुलरली नीचे। तीसरा बचा, थर्ड वन मान लो कि इधर चलता है v3 से, that is 2m. तो देखो एक्सप्लोजन इज बेसिकली अ प्रोसेस विच ऑकर ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेज, एंड इफ वी कंसीडर द बॉम्ब एज अ सिस्टम, तो इन द सिस्टम देयर इज ओनली इंटरनल फोर्सेज आर एक्टिंग, तो यू कैन से मोमेंटम इज कंजर्व, momentum is conserved. So initial momentum is equal to final momentum. What is the initial momentum? 0. What is the final momentum? It will consider 3 terms, that is m into 10 I cap plus m into this one, that is minus 10 j cap, and this is 2m into v vector. So it will get 2m into v vector, that is 10 I cap, 10m I cap plus 10m j cap. So what is v vector? That is minus 5 I cap plus 5 j cap. It is this masses. Velocity, right? Next, a mud ball of mass 2 kg is projected with initial velocity is projected from ground
with 10 meter 20 meter per second at 37 degree at an angle of 37 degree from horizontal. Right? If ball breaks into two fragments, if ball breaks into two fragments of masses in the ratio 1:2, such that at maximum height such that heavier one such that lighter one starts moving horizontally with 2 meter per second. Here with 1 meter per second. Calculate position where heavier one falls. राइट देखो इसमें क्या हो रहा है, यस देखेंगे प्लीज ध्यान से। इसमें क्या हमारे पास एक मड बॉल है, उसको इस प्रोजेक्टाइल में जाना है। जब वो हैवी यहां पर होती है अपने टॉप मोस्ट पॉइंट में, तो इट ब्रेक इनटू 3 पार्ट्स। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पर वी आई, तो व्हेन इट इज एट टॉप मोस्ट पॉइंट इट्स वेलोसिटी इज दिस, और ये कितने चली है यहाँ से 20 मीटर पर सेकेंड से। u is equal to 20 meter per second. It is shown at an angle of 37 degree from horizontal. So what is this component? U cos 37. Cos 37 is how much? 4/5. That is how much? 16. So when it is moving with 16 meter per second at this point, having horizontal component 16 meter per second, so its initial velocity is 16 meter per second, vi. अब वो जैसे ही वहां पर पहुंचती है तो it breaks into two components. One is a heavier one and another one is a lighter one. जो heavier one है और एक और लाइटर वन है,
एक का masses are in the ratio 1:2, मतलब ये m1 हो गया, m हो गया, ये 2m हो गया, which starts moving backward. Lighter one will start moving backward. 2m, this is m. कितनी वेलोसिटी से बैकवर्ड मूव करते हैं? विद 1 मीटर पर सेकेंड. राइट. तो अब देखो 2m की वैल्यू वेलोसिटी निकालो. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ 2m? तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, momentum is conserved there also. Initially momentum is in horizontal direction, so you can write horizontal में कितना लिख सकता है? Total mass is 3m. 3m into v. V is how much? 16 I cap. And what is final momentum? M is moving in backward direction. M into this, that is 1 I cap. 1 minus I cap plus 2m की हम velocity नहीं जानते. It will be in this direction v vector. So what is v? M will cancel out. 48 I cap plus I cap, that is equal to 2v. So what is v vector? V vector will come out to be, that is 49 by 2 I cap. And what is the height? From where height it is fall? It is u square sin square theta by 2g. uy का square. What is uy? That is u का sin 37. Sin 37 is how much? Twenty into sin 37. Sin 37 is 3 by 5. So 20 into 3 by 5. That is 12. Meter per second. So it is 12 meter per second. So what is height? Uy square by 2g. 12 square is 144 by 20. That will come out to be how much? 72 by 10 meter. So it means it starts moving with a velocity of 49 by 2 I cap from a height of 72 by 10 meter. तो basically ये इस लोकेशन से गिरेगा और ये फिर अपना एक अलग से प्रोजेक्टाइल करेगा. If you will see, its velocity is 16 and here it is 79 by 2. So if its initial velocity is more, तो ये जब आगे ये वाला जो बंदा है, it will fall at more distance. तो ये कहीं ऐसे जाएगा, right? So it will fall at this position. If you will want to calculate it, so you have to calculate the range corresponding to it. You have to calculate range corresponding to it. So you can say यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, देखो दिस इज द टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल इट इज. It will travel that much distance. What is this distance? This velocity 49 by 2 meter per second. What is this height? 72 by 10. So what is the time taken? Root 2h by g. So what is this range? R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? That is, this is, let's suppose v and this is h. So it will v into under root 2h by g. This is the answer for R1. Is it clear to all of you? This is the answer for R1. Right?
देखो नेक्स्ट, a block of mass m1 is moving with v1 on a horizontal surface. It strikes with a spring whose स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है K, whose one end is fixed with M2. Calculate maximum compression in spring. Calculate maximum compression in spring. We have to calculate this. This is the thing. This is the M1 moving with V. This is M2 connected with spring or spring constant K. Now when it will get maximum compressed, so both will start moving with the same velocity. When it is maximum compressed, both will start moving with the same velocity. Right? So when it will get maximum compressed, then both will start moving with the same velocity. So we can say what? Here, both momentum as well as energy are conserved. देखो यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज यहाँ पर जो भी चीज हो रही है उसके दौरान होगा क्या, पहले वो स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे. जब वो स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे तो जो M2 है उसकी तो वेलोसिटी बढ़ने लगेगी और M1 की वेलोसिटी घटने लगेगी. तो M2 की वेलोसिटी बढ़ने लगेगी और M1 की घटने लगेगी. लेकिन जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी तो उस टाइम पर इट विल बी द मैक्सिमम कंप्रेस्ड. जब इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते कुछ हो जाएगी और इसकी घटते घटते, तो उसके बाद ये कंप्रेस नहीं होगा. इट विल स्टार्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी. So we can say by conservation of energy, we can say half m1 into v square. It is equal to half m1 into v square. Here it is v1 plus half m2 into v1 square plus half kx square. That is the maximum compression in the spring. राइट. एंड यू कैन से V1 की वैल्यू आप कहां से कैलकुलेट कर सकते हैं. इसको सोल्व कर रहे हैं, देखो क्या आ रहा है, M1 इंटू वी स्क्वायर इट इज इक्वल टू M1 इंटू V1 स्क्वायर प्लस M2 इंटू V1 स्क्वायर प्लस KX स्क्वायर. बट बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यू कैन राइट कि इनिशियली हमारे पास एक ही ब्लॉक मूव कर रहे हैं, दैट इज M1 इंटू V. इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2 इंटू V1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1? M1 by M1 plus M2
into V. Right? This is the value of V1. If you put the value of V1 in the above equation, then you can easily calculate the value of X. From there you can calculate the value of X. जब आप V1 को ऊपर put कर देंगे. Clear? So by putting V1 in above equation, we get X. Is it clear to all of you? So this is the motion, right? लिखो इसको.